Hello friends, I am Deepanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Deepanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss this pattern and this is a spacing type pattern. Firstly we space and then point star in each row. So we used nested for loop to build this pattern. So we used outer for loop, and inside this outer for loop we takes two inner loop. First is for spacing and second is for moving the columns. So firstly we declare three variables that are used in nested for loop. So we declare integer type variable I, j and k, and I variable is used for outer loop, k variable is used for spacing loop, and j variable is used for moving the columns loop. So firstly we create or declaration of integer type variable I, j and k, and after declaration of I, j and k variable we create outer for loop, and in this outer for loop we take three parameter. Firstly we initialize I equals to 1 and check condition if I less than equals to 5 and I increment to 1, and inside this outer for loop we create spacing inner loop, and we used k variable for spacing loop. So we initialize k equals to 5 minus 1 and check condition if k greater than equals to I and k decrement to 1, and inside this inner and inside this loop we point space, and and then we create a second inner loop that is for moving the column. So we used j variable for moving the columns loop. So we initialize j equals to 1 and check condition if j less than equals to I and j increment to 1, and inside this loop we point star, and outside the inner loop we used backslash n for new line. When completing each row, cursor will move automatically to the next line. So when you compile this program there is no error, it is successfully compiled, and when you run this program the accurate output is shown as below. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 मीन्स के की वैल्यू यहाँ पे 4 है. तो फर्स्ट रो में 4 टाइम्स आपका स्पेस प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर ये सेकंड मतलब ये आपके कॉलम वाले लूप पे जाएगा. जे की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक स्टार प्रिंट कर देगा फर्स्ट रो में. 4 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट हो जाएगा. इसी तरीके से आपका आप ड्राई एंड रन करके देखना, आपका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो जाएगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न रिलेटेड टू दिस पैटर्न you can text me in the comment section, and I hope you enjoyed really our pattern program. See you next time. That is for me. I know one